Okay, so anything you've been thinking about or questioning or anything interesting? Hmm. No, not recently. I think I was just pondering over the same conversation we had in our last call about how valuation of, labor, how do you value someone's work, and how if you're doing something full time, and even if it's a mental effort and also some physical effort is involved, it does um, has to have some associated financial value also can be. So you cleared that for me actually. So I'm glad because that has been one big uh, conflict in my mind always, that how do you balance uh, doing something, and then if you cannot make your living out of it, then can you do it for all full time? So that was nice, I think. Okay. I think my own, I don't know, I'm glad I helped clear it up for you because it's not 100% clear for me also. But Correct. yeah, it comes basically. I think if you realize human value, you realize that what all human life, every single human life is supposed to be doing and what it is for. Mm. So how much should any human life be expending its time and energy and effort in doing same material production? One second, let me get an urgent call. In Raipur, just suddenly undergoing surgery. So, You pressed recording. something. Oh, sorry. By the way, Uh, I wanted to share there's a pause recording option also. yeah, So अभी if you मैंने want to pause ही pause. किया है. Yeah. What were we talking about? Yeah, that every human being is the purpose of each human life is to do something, and production and work is only one part of it. So how do we create an economy which is equal so that all human beings can do that little bit of production, because all of us need produced goods. And किसी को ऐसा ना हो जाए कि one person has to do so much and spend their whole lives and all day or majority of their life in just that. So that's what an equitable sort of system would be. Details need to be ironed out even. Yeah. Take that. I'm sure something will come. So besides that, we just started kind of from he's asked again. So we've been trying to understand what understanding is, and so what is understanding? Who is the one who understands, and what is the content of understanding? And on that, we found that the content of understanding is existence, the Jeevan, and humane conduct. And the one who understands is the Jeevan itself. And Mm. uh, in that kind of revision and review, it's in the course of understanding existence, we have found that existence is made up of these physiochemical compositions that are constantly undergoing composition and decomposition. So all physiochemical compositions are constantly in this process of composition and then eventually decomposition. So whether you look at a tree or you look at a human body or any other body, in fact, all of those are composed and then we have to decompose. That's the way the world works. That's where we left off. Mm. करके पुनः मिट्टी बन जाते रूप में अस्तित्व में विद्यमान है। इनका रचना विरचना सबको विदित है। झाड़ पौधे जैसा जो योग संयोग मिट्टी पानी हवा ये सब पाकर जब झाड़ बनते हैं, कुछ काल के पश्चात वो झाड़ अपने आप से सूख करके पुनः मिट्टी बन जाते हैं। तो इसी प्रकार लोहा पत्थर है, वो भी कुछ काल के पश्चात थोड़ा सा परिवर्तित होकर दूसरे वस्तु बन जाता है और वो भी मिट्टी हो जाता है। इसी प्रकार ये सभी वस्तुएं किसी एक स्वरूप में होकर
और दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होकर वो बदलते रहते हैं। इसी का नाम है ये एक परिवर्तनशीलता। ये So similarly, so it already covered this actually, and how everything, whether it's a tree or a rock or iron or anything that it may be, everything is constantly forming and then it changes that formation. That's what we also call decomposition. So whether even if it's a rock or a bit of iron, it'll transform into something else. So that is itself what is called transformativeness. So this parivartanshilta, transformative. So all physical परिवर्तन भौतिक रासायनिक संसार में निरंतर अबाध गति में चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसी रासायनिक वस्तु भौतिक वस्तु के रूप में ही मनुष्य शरीर भी होती है। So transformation is something that is eternally occurring in the physiochemical world, and within this physiochemical world, there is also the human body. मनुष्य शरीर जीव शरीर भी भौतिक रासायनिक द्रव्य ही है। इन द्रव्य का रचना विधि गर्भाशय में होना देखा गया है। ये So the human body and the animal body, they are all simply physiochemical substances, and the formation of this composition of this physiochemical substance has been seen to occur in the womb. विरचित होना कुछ काल के पश्चात पता लगता है कहीं ना कहीं मनुष्य का शरीर भी विरचित होकर वो विभिन्न स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसा मिट्टी में कुछ वस्तु हवा में। So first it gets composed in the womb, and after a certain period of time we find out that the human body also decomposes into various other elements. For instance, some of it turns into mud, some of it turns to air. में कुछ वस्तु और कुछ और वस्तु है पानी के रूप में और रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित होकर अंततोगत्वा ये धरती में ही समा जाते हैं, धरती के वातावरण में ही रह जाते हैं। ये बात। And upon this kind of transformation, all these elements become part of this earth itself. They become imbibed within the earth and imbibed within the atmosphere or the other parts of this earth. आप हमको समझ में आता है। और इसके बाद समझने वाली वस्तु जीवन सदा सदा एक सा रहता ही है, क्योंकि विकास के क्रम में जो चलकर जो परमाणु ही है जो गठनपूर्ण स्थिति में निरंतर बना रहता है। Now, the thing that is the one that understands the Jeevan, that is eternally the same. That does not transform because it is a configurationally complete atom, which I can't remember what it is. कि विकास के क्रम में जो चलकर जो परमाणु ही है जो गठनपूर्ण स्थिति में निरंतर बना रहता है। Because it is in this progression of development itself, that the progression of development in which the atom itself becomes configurationally complete and then remains eternally the same. गठनपूर्ण परमाणु के रूप में जीवन को बताई गई है, वो जीवन ही है जो समझने वाली वस्तु मनुष्य। So the Jeevan has been called the configurationally complete atom, and it is this Jeevan itself which is the thing, the entity that understands. शरीर में भी वही माने संपूर्ण मनुष्य शरीर में समझने वाला वस्तु जीवन ही है। ऐसे जीवन अस्तित्व को समझने के क्रम में सह अस्तित्व के रूप में अस्तित्व को समझा गया, मैं समझा हूँ। ऐसे सह अस्तित्व वैसी असहअस्तित्व के नजरिया में संपूर्ण परिस्थितियों में हम व्यवस्था के रूप में जी पाते हैं। So it is this Jeevan, what is it? It is this such a Jeevan which is present in all human bodies.
and it is such a Jeevan which can understand, which is present in the human body. Actually, let me just listen to it. It's a bit long. मैंने संपूर्ण मनुष्य शरीर में भी वही मैंने संपूर्ण मनुष्य शरीर में समझने वाला वस्तु जीवन में है। Right. So in all human bodies, entity that understands is the very same Jeevan. ऐसे जीवन अस्तित्व को समझने के क्रम में सह अस्तित्व के रूप में अस्तित्व को समझा गया। मैं So such a Jeevan, in the process of understanding the existence, was able to understand coexistence. I was able to understand coexistence, and on the basis of that, I was able to live in order. समझा हूँ ऐसे सहअस्तित्व वशी असहअस्तित्व के नजरिया में संपूर्ण परिस्थितियों में हम व्यवस्था के रूप में जी पाते हैं। मुख्य बात यही है व्यवस्था में That is the main point. The main point being that it is thanks to the Jeevan understanding coexistence, and due to this understanding of coexistence, that I was able to live in order in all dimensions. जीना ही हमारा जीवन का आशय है, व्यवस्था में जीना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है, व्यवस्था में जीना ही जीवन का सुख है। So living in order is the very आशय, intention of our Jeevan. Living in order is the very objective of our Jeevan, and living in order is the very happiness of our Jeevan. तो अव्यवस्था में जीकर जीवन सुख को अनुभव नहीं कर पाता है और समस्या से पीड़ित होता है। फलस्वरूप समाधान के लिए खोज स्वाभाविक है। जीवन So when in disorder, the Jeevan can never find happiness, and as a result, it finds सुख को नहीं ढूंढ पाता, समस्या से पीड़ित रहता है। It remains riddled with the suffering, misery of problems, and therefore is constantly and therefore being in the search for solution is a natural outcome. So outside of order, there is no happiness. So there is this unhappiness or misery of the problems, and the problem is the lack of order, actually. And then that misery of the problems leads to a natural search for the solution. We're constantly searching for solutions. जीवन में निरंतर अनुसंधान होती रहती है। जीवन ही नहीं है, इसके पूर्व में भी देखा गया है, तो परमाणु में भी अनुसंधान होती है, परमाणु अंश में भी अनुसंधान होती है। स्वरूप समाधान के लिए खोज स्वाभाविक है। जीवन में निरंतर अनुसंधान होती रहती है। जीवन ही नहीं है, इसके पूर्व में भी देखा गया है, तो परमाणु में भी अनुसंधान होती है। There is a continuous anusandhan happening in the Jeevan. Now, anusandhan is sort of like the word I've used for it is like discovery or invention, or basically something, an attempt to find something better. So that is anusandhan. A few words, maybe inquiry, not quite inquiry, but any process in search for something better. So that is the search. That search for something better is what I think anusandhan. So there's constant anusandhan or discovery. Let's call it discovery for now. Discovery happening in the Jeevan. In fact, it is not only in the Jeevan, but even before that, in the atom, there is a constant discovery taking place. It continues to occur. परमाणु अंश में भी अनुसंधान होती है। ये जो हरदम परिवर्तन के लिए मूल तत्व है, प्रवृत्ति से है, हर जगह में सह अस्तित्व में होने का ही प्रवृत्ति है। परमाणु अंश भी सह अस्तित्व में होने की प्रवृत्ति वशी ही दो परमाणु के रूप में, अणु के रूप में परिवर्तित होते हैं।
So it is, in fact, not only in the Jeevan, not only in the atom, but also in the subatomic particles. There is this constant process of discovery. I'll find a better word, anusandhan. And this anusandhan or discovery is the basic tendency or the movement towards change. And listen to this bit again. Not every. Anusandhan is also like, this philosophy was his anusandhan, kind of like his discovery or his search. Yeah, then discovered. जीवन में निरंतर अनुसंधान होती रहती है। जीवन ही नहीं है, इसके पूर्व में भी देखा गया है, तो परमाणु में भी अनुसंधान होती है, परमाणु अंश में भी अनुसंधान होती है। ये जो हरदम परिवर्तन के लिए मूल तत्व है, प्रवृत्ति से है, हर जगह में सह अस्तित्व में होने का ही प्रवृत्ति। So this constant tendency for change, it is हरदम परिवर्तन के लिए मूल तत्व है. So this discovery or this movement towards something better, that anusandhan, that is happening every moment, that along with its own pravritti, so along with its own nature. So he's saying that everything is constantly looking for something better along with its nature. Like, it's not like it leaves its nature behind. It has a nature, and with that nature, it's searching for something better. So this constant anusandhan is happening thanks to coexistence, thanks to it being in coexistence. प्रवृत्ति है। परमाणु अंश भी सहअस्तित्व में होने की प्रवृत्ति वशी जो परमाणु के रूप में, अणु के रूप में परिवर्तित होते हैं। And that is why the atom as well as the subatomic particles are all, it is because of their being with this tendency for coexistence that they come together as an atom or as a molecule. So there is this constant, this anusandhan basically is towards more coexistence. So the subatomic particles do anusandhan to come towards the atom, then the atoms do anusandhan to form more stable structures and become molecules, if that is what is more stable. और अणु भी सहअस्तित्व प्रवृत्तिवशी अणुरचित रचनाओं के रूप में हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी रचना धरती है। And molecules also come together to form molecular structures, molecular composition. Of these, the largest composition is this planet Earth, or well, this planet. इस प्रकार के अनंत ग्रहगोल इस अस्तित्व में होने की बात आदमी को समझ में आती है, आदमी जात को समझ में आती है। ये कुल मिलाकर के सहअस्तित्व का ही अभिव्यक्ति है। So in this way, there are the infinite planets and celestial bodies that are present in existence, that we can understand, that the Jeevan can understand, are all a part of coexistence, are all a क्या बोले सहअस्तित्व का ही something है, basically consequence. ये कुल मिलाकर के सहअस्तित्व का ही अभिव्यक्ति है। Abhivyakti, altogether an expression of coexistence. Also, so here I'm seeing in the book they've translated anusandhan as exploration. I think that's a safe translation of the word exploration. अस्तित्व मूलतः तो व्यापक वस्तु में समाहित संपूर्ण एक एक के रूप में गिनने वाली प्रकृति ही, यही संपूर्ण वस्तु का स्वरूप है। So coexistence is essentially this unitary nature saturated within this omnipresent entity space, and that is the basic meaning of coexistence.
में गिनने वाली प्रकृति ही यही संपूर्ण वस्तु का स्वरूप है. This is the true nature of all entities. The fact that they are saturated in they're unitary entities saturated. जो एक एक के रूप में जो कुछ भी गिनने में आता है उसमें विविधता का मूल तत्व है. सब मूल रूप में परमाणु में निहित अपरमाणु अंशों का ही संख्या भेद है. इन संख्या So now when we look at this unitary nature, the basic reason, basic causation behind the diversity that we see within this unitary nature is the difference in the number in the subatomic particles, the sankhya, the quantitative differences within the subatomic particles that compose an atom. भेद से ही मूल में वस्तु की विविधता का आधार है और स्थापना है. इन विविध में वस्तु की विविधता का आधार है और स्थापना है. इन विविध वस्तुओं का स्थापना और आधार के आधार पर इसमें रचित रचनाओं का भी विविधता होना पाया जाता है. So that is the basic, that is the basis and the establishment of all the diversity that is seen in nature. And what is it? I can understand the sentence. आधार है और स्थापना है. इन विविध वस्तुओं का स्थापना और आधार के आधार पर इसमें रचित रचनाओं का भी विविधता होना पाया जाता है. So it is on the basis of the diversity that is so on the basis of the diversity of on the basis of the differences in the quantity of the subatomic particles, we have the establishment of diversity of atoms. And on the basis of the diversity of these atoms, we have, and the diversity in these atoms become the basis and establishment of the diversity in the structures that they compose. So the diversity in the number of subatomic particles is the basis and establishment of diversity in atoms. And the diversity in atoms becomes the basis and establishment for diversity in their composition. जैसा वनस्पतियों में अनेक प्रजातियों का वो मैंने रचनाएं देखने को मिला, झाड़ों के रूप में, पौधे के रूप में, झाड़ भी अनेक रूप में रचित होता हुआ देखने को मिला. और ये अपने बीज वृक्ष नियम से अपने को स्वस्थ होना पाया जाता है. For instance, we see within the plant world, we see various kinds of plants. We see bushes and trees and many other forms of plants. And within bushes also, we will find many sorts of bushes. And in all of these, we also see that it is on the basis of the seed tree principle that they are found to be healthy. So Bij Vriksh Niyam is basically that the seed determines what the tree is. The hereditary. मनुष्य शरीर भी रासायनिक भौतिक वस्तु से निर्मित रहती है. रासायनिक भौतिक वस्तु के मूल में परमाणु ही वस्तु है. ये परमाणु में निहित परमाणु अंश ही मुख्य वस्तु है. So the human body is also a physical chemical entity, and at the base of all physical chemical entities we find there are atoms, and within these atoms also we find that it is these subatomic particles that are composing them. इसी के आधार पर जिन द्रव्यों से रचित जो रचना होती है, उन सभी रचनाएं स्वाभाविक रूप में अपने स्वरूप में वो एक वैभव है, एक द्रव्य, एक रचना है, उसका एक मौलिक प्रयोजन है.
मौलिक In this way, all these entities are basically जो जिन जिन द्रव्यों से रचित जो रचना होती है उन सभी रचनाएं स्वाभाविक रूप में अपने स्वरूप में वो एक वैभव है, एक so any entity is composed of many other entities, and such a substance, this substance altogether is naturally a sort of vaibhav of its own, naturally a sort of grand manifestation of its own kind. द्रव्य भी एक रचना है, उसका एक मौलिक प्रयोजन है। मौलिक And so such substances are also sort of composition, and each composition also has its purpose. मौलिक प्रयोजन हर रचना में सह-अस्तित्व में भागीदारी है। वो रचना के मूल में जो द्रव्य है वो भी सह-अस्तित्व में होने का ही महिमा है। So every substance is also a participation in coexistence, and the compositions that form the basis of any substance, they are also manifestations of coexistence itself. जो द्रव्य है वो भी सह-अस्तित्व में होने का ही महिमा है। इन महिमा के आधार पर जो संपूर्ण अस्तित्व अपने में विद्यमान है, वैभवित है, प्रकाशित है, प्रमाणित है। So the compositions that make up any larger substance, they are also a mahima of coexistence. So they are also the significant consequence of coexistence. They're also essentially mahima is like uski mahima. This is the significance of something, or it's the significant contribution of something. So even the constituting compositions are a consequence, are a consequent result of coexistence itself. And in this way, everything is coexistence manifestation. So प्रकाशित है, what is it? प्रकाशित है, वैभवित है। तो अपने में विद्यमान है, वैभवित है, प्रकाशित है, प्रमाणित है। So on the basis of this, all of existence is in itself is coexistence, being present, evident, illuminated, and evident. All of existence is coexistence itself. Being present, being illuminated, being evidenced, and revealed basically. ये समझ में आती है। This इन can be अस्तित्व में ही हम मानव एक भाग है, एक वस्तु है। सह-अस्तित्व में मानव अविभाज्य है। सह-अस्तित्व को छोड़कर मानव कहीं भाग नहीं सकता। In this coexistence, humans are but a part. We are one entity within all of coexistence. We cannot escape coexistence and go in. भागने के लिए जितने भी कोशिश किया उतने ही परेशानी होना स्वाभाविक रहा। इसको Whatever attempts we have made to run away from coexistence, the consequent troubles have been a natural outcome. भुगत चुका है मानव जाति शायद, तो यदि भुगतना कम है तो आगे भुगत लेंगे। यदि भुगत चुके हैं, यदि परिवर्तन चाहते हैं, This humankind has already suffered through, and if there is some if we feel that there is some suffering of this that we still are left to complete, then we can suffer some more and we'll complete that suffering, but eventually तो आगे भुगत लेंगे।
यदि We'll भुगत चुके suffer. हैं, यदि परिवर्तन चाहते हैं तो परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएंगे। If we have finished suffering, if we want some change, then let's prepare ourselves for some change. Then we will prepare ourselves for change. ये स्वाभाविक रूप में होने वाली प्रक्रिया है। इसमें This is a process that will occur very naturally. किसी के ऊपर कोई चीज लादने की बात नहीं होती है, कोई चीज उपदेश देने की बात नहीं होती है। हर व्यक्ति अपने में समाधान चाहता है, उसके लिए शोध करना हर व्यक्ति का काम है। This is not something to be imposed on anyone. It is not something to preach to anyone. Every human being wants to be happy in themselves, and for that they are and to inquire after that or to research after that happiness is a natural process for each human. अपने में समाधान चाहता है, उसके लिए शोध करना हर व्यक्ति का काम है। Wants resolution. हर व्यक्ति व्यवस्था में जीना चाहता है, इसके लिए हर व्यक्ति शोध करने के लिए अधिकारी है। हर व्यक्ति So every individual wants resolution. For that, every single individual has the authority to research resolution for this. Every individual wants what did he say the second? Samriddhi. जीना चाहता है, व्यक्ति का काम है। हर व्यक्ति व्यवस्था में जीना चाहता है, इसके लिए हर व्यक्ति शोध करने के लिए अधिकारी है। Every individual wants to live in order, and for that, every individual has the authority to research to that end. हर व्यक्ति जब अपने में शोध पूर्वक ही जीना है, इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता अपने आप समझ में आता है। When each individual must live through their own inquiry, through their own research, in that we see the individual independence. Swatantrata, there has to be a better translation, but let's go with English. Self-regulation. Because it's, yeah, but actually freedom, each individual's freedom, yeah. शोध का उद्देश्य और स्पष्ट है, अनुसंधान का उद्देश्य स्पष्ट है, जीने का उद्देश्य स्पष्ट है। So, the objective of research or inquiry is clear. The objective of exploration or discovery is clear. And the objective of living is also clear. जीना क्या उद्देश्य में ये बिल्कुल ध्रुवीकृत है। हर मानव अपने में सुखी होने के लिए ही जीता है। As for the objective of living, it is absolutely anchored, which is that each individual lives to be happy. सुखी होने के लिए प्रक्रिया एक ही बताई गई, जीवन मानव का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य, ये दोनों संपन्न होने चाहिए। And for the process of happiness, and for happiness, these two processes have been described, the human goals and the Jeevan goal. तो समझदारी से जीवन का उद्देश्य पूरा होता है, तो अस्तित्व को ही समझना है और जीवन को ही समझना है और जीवन जागृति को ही समझना है। ये समझ यदि पूरा होता है, जीवन तृप्त होता है, तो ऐसी तृप्त So, upon understanding the Jeevan's goals are arrived at, and what has to be understood, then it is the existence that we must understand. It is Jeevan that we must understand, and it is the Jeevan's awakening that we must understand. And this can be understood. ये समझ यदि पूरा होता है, जीवन तृप्त होता है, तो ऐसी तृप्त जीवन जब मानव का उद्देश्य है। When, as soon as such understanding is completed,
the Jeevan becomes fulfilled. And such Jeevan, when they exist as humans, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को इसको सदा सदा बनाए रखने में समर्थ होता है। ये such Jeevans as humans become eternally competent at maintaining resolution, prosperity, fearlessness, and coexistence, which were the human goals. व्यवस्था का व्यवस्था में जीने का प्रमाण है। व्यवस्था में कोई जीता है, इन चारों पदार्थ अपने आप से मानव के लिए उपलब्ध रहना ही है। This is the evidence of living in order. If anyone lives in order, these four things become available to the human. इसी ऐसे ही मानव परंपरा एक दूसरे के लिए उपकारी होता है, फलस्वरूप सह अस्तित्व का अर्थ सार्थक हो पाता है। In this way, it is such a human tradition that becomes upkari for each other. Upkari is like to give. Upkar karna is to, not generosity, like not obligation. Upkar is you do out of the goodness for the welfare of all. So whatever is done for the welfare of all, that is upkar. Words are not not favor. Oh. I mean, upkari is more like favor to all. So such a human tradition, which basically is the human tradition of orderliness, makes resolution, prosperity, fearlessness, and coexistence available to all humans. So in this way, it becomes upkari or favorable to. In this way, it becomes favorable to all humans. We become favorable to each other. Such a tradition becomes. इसी इन चारों पदार्थ अपने आप से मानव के लिए उपलब्ध रहना ही है। इसी ऐसे ही मानव परंपरा एक दूसरे के लिए उपकारी होता है, फलस्वरूप सह अस्तित्व का अर्थ सार्थक हो पाता है। So such a human tradition is beneficent for one another, and consequently, the meaning of coexistence becomes exemplified. Sarthak hota hai. Made meaningful. It's like lived out. The meaning is lived out. सह अस्तित्व को सदा हम बनाए रखना ही कुल मिलाकर के व्यवस्था है। व्यवस्था में जब कभी गड़बड़ी होती है, सह अस्तित्व के विपरीत कुछ किया जाना ही है, तो मनुष्य में वो कर्म स्वतंत्रता, कर्म कल्पनाशीलता दोनों अस्तित्व को बनाए रखना ही सार्थक हो पाता है। सह अस्तित्व को सदा हम बनाए रखना ही कुल मिलाकर के व्यवस्था है। So eternally upholding or retaining coexistence is itself is what order is. Orderliness is eternally ensuring coexistence. व्यवस्था में जब कभी गड़बड़ी होती है, सह अस्तित्व के विपरीत कुछ किया जाना ही है, तो मनुष्य में वो कर्म whenever there is any problem or any disturbance in one's order, in orderliness, that is essentially going against coexistence. That it's always that we have gone against coexistence. स्वतंत्रता कर्म Yeah, exactly. Yeah, opposite direction, because there are only two directions, towards coexistence, away from it. Nothing is neutral. कल्पनाशीलता दोनों किया जाना ही है, तो मनुष्य में वो कर्म स्वतंत्रता, कर्म कल्पनाशीलता दोनों चीज विद्यमान है। ये विशेषता है। इसके आधार पर कल्पनाशीलता वश, कर्म स्वतंत्रता वश कुछ भी गड़बड़ कर देता है। So humans have this creative imagination and the freedom of action, which is free will. So humans have this imagination and free will, and it is due to this we
can do anything. So because of this, because of our imagination, because of our free will, we do have the possibility of causing disturbance. We can cause any sort of disturbance also. इसके आधार पर कल्पनाशीलतावश, कर्म स्वतंत्रतावश कुछ भी गड़बड़ कर देता है। जैसा ये धरती को बहुत तंग किया गया, मनुष्य का कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रतावश ही तो किया गया। For instance, this earth has really been troubled. All this has been done due to our imagination and free will only. I can't catch this sentence so sweetly. तो ये पता नहीं था इस गड़बड़ी से अपने को क्या परेशानियां समीचीन हो सकती है, ये बात तो पता नहीं था। जब पता होगा तब उसका उपाय नहीं रह गया। ऐसा नहीं, Because we didn't understand, because we didn't see that because of our actions, what are the troubles that we might face eventually. And when we found out that we face troubles, then we started looking for solutions. रहता की जगह में मानव आ चुका। जब पता होगा तब उसका उपाय नहीं रह गया। ऐसा नहीं रहता कि Right. When we started finding out, by then there were no solutions to be found. And it is at such a nirita ki jagah. What is word is it? And so humans have reached such a state of this nirita. Sounds like that. What is the word? निर्हिता की जगह पे आ गया। था इस गड़बड़ी से अपने को क्या परेशानियां समीचीन हो सकती है, ये बात तो पता नहीं था। जब पता होगा तब उसका उपाय नहीं रह गया। ऐसा निर्हिता की जगह में मानव आ चुका। निर्हिता मतलब आई थिंक निर्हित मतलब जिसमें किसी का हित नहीं है, प्रोबेबली निर्हिता की जगह। No, some strange spelling it must have. Yeah, probably like that. I think what you're saying. Like we reached a insolvable place, no? You created such a mess that now we're in an insolvable space, and now no one is benefiting from it. Is what I'm taking. I think that's how it can be. And so sorry state of affairs. Even we were doing these things, so we didn't understand what sort of problems they will cause. And then by the time we realized that these problems have arisen, by then there were no solutions to be found. Actually, we've gone too far. मनुष्य को सदा सदा अपना कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता पूर्वक ही अनुसंधान करने के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। शोध करने के लिए स्वाभाविक अवसर है। यह शोध humans eternally have this natural tendency to do research or inquiry and to do exploration or discovery because of this, thanks to this imagination and free will. शोध और अनुसंधान इसी उद्देश्य से होना देखा गया, सार्थक होना देखा गया। अनुसंधान और शोध जब अव्यवस्था के लिए और समृद्धि, समाधान और सहअस्तित्व के लिए हम जीने की जितने भी शोध कर पाते हैं, वो सारे शोध स्वयं को भी सार्थक होना पाया गया और अन्य के लिए भी सार्थक होना, सहायक होना देखा। But it is only those kinds of inquiries and explorations that prove to be meaningful for both ourselves as well as for others, that are in the direction of or for, that are towards resolution, prosperity, fearlessness, or coexistence. It is only such inquiries and explorations that they do become meaningful, and for ourselves also, and even for others. यही समझदारी का कुल मिलाकर के स्वयं तृप्त रहना और समर्थ रहना
और साथ साथ उपकार करना, यही बन। And this is the, altogether, this is the culmination of understanding, which is to be fulfilled and to be beneficent. इसके मूल स्वरूप में हम ये भी देखेंगे समझदारी का स्वरूप भी क्या है, समझदारी से क्या मनुष्य को होता है, मनुष्य में ये क्या चीज, क्या गुण पैदा होता है, ये भी देखा गया। And along with this, we also saw that what is this basic form that understanding takes. What are the properties that emerge due to, what are the basic fundamental properties that emerge thanks to understanding? That has also been seen. उसके बारे में भी ये स्मरण में दिलाया कि तो हर व्यक्ति में। And regarding that also, I have brought to your attention that अपने में विश्वास होता है और श्रेष्ठता का सम्मान होना, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन और व्यवहार में सामाजिक व्यवसाय में स्वावलंबन, इन सब। right. So which were I have brought to your attention that any person who has understood becomes confident in oneself, has respect for greatness, so is sociable in behavior, has balance in personality and talent, and is self-sufficient in occupation. So these were the 5 points. Respect for greatness or excellence, I think is better. Shrestha. Excellent. सद्गुणों, इन्हीं को सद्गुण कहा जा सकता है। इन सद्गुणों के साथ मानव सामाजिक होना देखा गया। These are the very things that can be considered to be merits, and with such merits, humans can be been seen to become social. Basically, to be able to participate in society. ये अभी तक की एक साथ संक्षेप रूप में जिन बातों को देखने के लिए बात कही गई, ये सब बातें पूरी हुई। So this is in summary what we have, the essence of all that we have discussed up to now. इसमें जो मूलतः विद्या का जो स्वरूप है, समझदारी ही है, वह समझदारी को प्रमाणित करना ही विद्या है। In this, basically, the form that learning takes is understanding. That is, understanding is basically, so understanding is the evidence of learning. Learning is the translation for Vidya. Some, you could say learning in the sense of knowledge. So knowledge, the evidence of knowledge is our living with understanding. विद्वता जो कुछ भी होता है, जो माने अस्तित्व सहज ही है, और विद्वान मानव ही होता है। मानव परंपरा में ही विद्वता का प्रमाण हो पाता है। Vidvata. So knowledgeability is something that happens in a way that is natural to existence. And so knowledgeability is becoming basically natural to existence. How I'm understanding that is that you become congruent to how existence is. That is what Vidvata is. You become aligned to the nature. You know, you become natural in a way of manner of speaking to how existence is, which is in line with coexistence. And this knowledgeability, so this learning happens when there is this knowledgeability, which is becoming aligned. And this such a learned entity is the human itself. मानव ही होता है, मानव परंपरा में ही विद्वता का प्रमाण हो पाता है। So the learned entity is the human itself, and it is only in the human tradition that knowledgeability gets evident.
और जीव परंपरा में, वनस्पति परंपरा में, जो वस्तु परंपरा में विद्वता की बात नहीं होती है, उनमें भी शोध वाला बात देखा गया है, क्योंकि सहअस्तित्व की प्रवृत्ति स्वयं में एक शोध विषय ही है। हर इकाई अपने में शोध कर्म में ही जुटा हुआ है। In all other traditions, such as the animal tradition or the biological tradition or the material tradition, we do not see any trace of knowledgeability. Although they are engaged in research, in inquiry, because the very nature of coexistence is to have inquiry. Because due to coexistence, the very nature of things is to undergo exploration or inquiry towards something better. This anusandhan, which is a search for something better. So all entities are engaged in such sort of inquiry and exploration. शोध विषय ही है। हर इकाई अपने में शोध कर्म में ही जुटा हुआ है। उसमें all entities are engaged in this exploration, these inquiry. I mean, shows is like almost like research. Basically, it's to find something better. So shows is always in search of something better. So is anusandhan. So exploration and inquiry are these two words we are using. So when we say that material is also engaged in this show, it's not like humans engage in shows, because humans will engage in shows using our imagination and freedom. Material nature will engage in search with their abilities and their properties. इतना ही देखा गया। अभी 4 बात मनुष्य में सब बात समझाई गई। जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, 4 बात बताई गई, जिसमें से पहचानना, निर्वाह करना हर वस्तु में निहित है। So, there are 4 activities that have been talked about: knowing, accepting or believing, recognizing and responding, of which all 4 are present in humans. I'm sure he mentioned what everything else does. में एक शोध विषय ही है। हर इकाई अपने में शोध कर्म में ही जुटा हुआ है। उसमें इतना ही देखा गया। अभी 4 बात मनुष्य में सब बात समझाई गई। जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, 4 बात बताई गई, जिसमें से पहचानना, निर्वाह करना हर वस्तु में निहित है। So the only thing about this, all entities of nature conducting research or inquiry, the only thing in that is that we've already talked about how there are these 4 activities occurring in the human: knowing, believing, recognizing and corresponding. And of these, recognition and corresponding occurs in every single entity of existence. So it is only in the Jeevan that the knowing and all that. हर वस्तु एक दूसरे वस्तु को पहचानता है, तभी निर्वाह कर रहा है। एक परमाणु अंश भी एक दूसरे परमाणु अंश को पहचानता है, फलस्वरूप वो व्यवस्था में जी पाता है। ये Every entity recognizes every other entity, therefore it is able to correspond. Every subatomic particle recognizes the other subatomic particle, and therefore as a consequence they are able to live exist as an order, the atomic order. एक दूसरे के साथ जी पाते हैं, रह पाते हैं और कार्य कर पाते हैं, व्यवस्था में प्रकाशित हो पाते हैं। And it is because of this recognition and corresponding that entities are able to exist with each other, remain with each other, work with each other, and basically exhibit order with each other. इसी प्रकार एक अणु से लेकर बड़े बड़े ग्रहगोल अभी धरती है। धरती भी दूसरे धरती को पहचानता है, फलस्वरूप निश्चित अक्षय दूरी में कार्य करता है। So similarly, in this very same way, from the atom to the largest of the celestial bodies,
all these planets, like even the Earth, they recognize each other, and therefore it is able to maintain this definite distance with the other planets and is able to function in this manner, in order. दूसरे धरती को पहचानता है, फलस्वरूप निश्चित अच्छे दूरी में कार्य करता है, फलस्वरूप ये सब व्यवस्था में होता हुआ आप हमको नजर आता है. As we can, इस ढंग से and as a consequence of that, we can see it is Everything in visible to order. us that everything is. Everything सभी appears with order. पदार्थावस्था भी, प्राणावस्था भी, जीवावस्था भी एक दूसरे को पहचानते हैं, निर्वाह करते हैं. इस बात का प्रमाण प्राकृतिक रूप में ही स्पष्ट हो जाता है. मनुष्य भी In this way, we can see how the material order, the plant order, the animal order, they all recognize each other and correspond accordingly. And humans too. एक दूसरे को पहचानने और निर्वाह करने में तृप्त नहीं हुआ, तो इसमें शंका कुशंकाएं पैदा हुई और दो चीज इनके साथ जुड़ती है, वो है जानना मानना. Now humans have been unable to recognize each other and have been unable to correspond each other, and so we have not been fulfilled in this way, and we've had our doubts and confusion, and for that we know that two other activities, two other processes are added to humans, which is knowing and जानना believing. मानना. Knowing. जानने मानने की क्रिया के साथ ही मानव अपने को पहचानने निर्वाह करने में आश्वस्त होता है. जानने मानने की स्थली में प्रयोजनों को, सार्थकता को ही जानना मानना होता है. It is only upon knowing and believing that humans come in the state of feeling reassured in their recognizing and corresponding. And it is only with knowing and believing, accepting, purposely. अपने को पहचानने निर्वाह करने में आश्वस्त होता है. जानने मानने की स्थली में प्रयोजनों को, सार्थकता को ही जानना मानना होता है. It is in this state of knowing and believing. In fact, it is the meaning and purposes itself that are known and believed. So the thing to be known and believed is the meaning and purpose. प्रयोजनों को जानने मानने की स्थिति में ही मानव सामाजिक हो पाता है. प्रयोजनों को जानता नहीं, मानता नहीं, तब तक सामाजिक होता नहीं है. सहज It is only in the state of knowing and accepting purposes that humans are able to be social, and when they don't understand purposes and meaning, they are unable to be social. अस्तित्व प्रमाणित होना ही नहीं है. मनुष्य में एक बहुत बड़ी भारी गरीबी का कारण ये भी है. यही साधन है. जानने मानने के अवसर रहते हुए नहीं जानना, नहीं मानना की स्थिति में कंगाल हो जाता है और स्वयं दरिद्र रहता है तो दूसरों को दरिद्र बनाता ही है. So, what is it? When we don't know and don't understand purpose, we are unable to let them go. Sorry, it was a bit. मनुष्य में एक बहुत बड़ी भारी गरीबी प्रयोजनों को जानता नहीं, मानता नहीं, तब तक सामाजिक होता नहीं है. सह अस्तित्व प्रमाणित होना ही नहीं है. मनुष्य में एक बहुत बड़ी भारी गरीबी का. Right. So until we know purpose and accept purpose, till then we cannot evidence coexistence. We cannot be social. Being social is our exhibition of coexistence. And so this is a very big and heavy impoverishment in humans actually. That unless we know and understand purpose and meaning, we find ourselves to be quite incapable. सह अस्तित्व प्रमाणित होना ही नहीं है. मनुष्य में एक बहुत बड़ी भारी गरीबी का कारण ये भी है. यही साधन है. जानने मानने के अवसर रहते हुए नहीं जानना, नहीं मानना की स्थिति में कंगाल हो जाता है और स्वयं दरिद्र रहता है तो दूसरों को दरिद्र बनाता. Right.
that this is our impoverishment, that despite having the resources to know and accept, if we choose to not understand and not know and not accept, we become impoverished. And upon becoming impoverished ourselves, we try to impoverish others as well. बनाता ही है। सो मानव अपने दरिद्रतावश ही धरती को दरिद्र बनाया है, इतना हम And it is due to the humans' impoverishment that we have impoverished the earth as well. जानते हैं, इसमें दो राय नहीं है। मनुष्य यदि कंगाल नहीं होता, धरती को बर्बाद करने के लिए तो प्रयत्न नहीं करता। This is something that I know, and there are no questions about. Had humans not been had humans not felt impoverished or had not felt penniless, we would not have impoverished Made the earth. earth. ये बहुत सुस्पष्ट है। इस तकलीफ सारा मानव किया तो इन्हें गिने लोग ही इस प्रकार के कृत्य किया, भोगने वाला पूरा 700 करोड़ आदमी की स्थिति। This is absolutely clear. And the ones who are doing this, the ones who have done this, are actually very few people you can count on your fingers. But the ones who suffer the consequences are all 700 crores. में आ चुकी है। ये बात को अपने को ध्यान में लाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ ये जो जानने मानने वाला जो भाग है, इसको मैंने प्रखर बनाया जाए। हर व्यक्ति में प्रखरता की संभावना है, हर व्यक्ति की में इसकी प्रखरता की आवश्यकता है। This I have understood, and I believe that this aspect of understanding and accepting, knowing and believing, that needs to be made, to be improved upon. And every individual has the need for the improvement of this knowing and accepting, the need for व्यक्ति में प्रखरता की संभावना है, हर व्यक्ति की में इसकी प्रखरता की आवश्यकता है। यह समीचीन है। मैंने प्रखर बनाया जाए। हर व्यक्ति में प्रखरता की संभावना है, हर व्यक्ति की में इसकी प्रखरता की आवश्यकता है। यह समीचीन है। ये every individual has the need for such improvement in knowing and believing. Every individual has the possibility for such improvement in knowing and believing. And this is Samichin. Samichin is presently available. पहली बात हो गई। इस प्रकार से मूलतः विद्या का स्वरूप समझदारी है। समझदारी को प्रमाणित करना ही है और इसको परंपरा के रूप में प्रमाणित करना है। ये विद्या का मतलब है। So this is the first thing that we have talked about. Essentially that the form that learning takes is understanding. Basically learning occurs in the form of understanding, and understanding needs to be evident. This is the basic point. End also. Process is something overview. No, I get it. I think it wasn't that difficult today, though some words, some places were that, but I think I have a sense of what he's saying. Now I think he's getting into more detail into Janna Manna aspects. Right now he's summing up all that he has already covered and basically also giving us the main point that we have missed out on this aspect which makes us human. You have to know and you have to understand. You have to know and understand purpose, and only then will we achieve the Jeevan goal. When we achieve the Jeevan goal, which is through understanding, we will be able to live out the human goals. And when one person is able to live out the human goals, that means they're living in order. And one person living in order allows other people to also have access to this human. And that is our complementarity, and that is our evidence of coexistence.
Yeah. All right. ठीक है. Okay then. Bye. Bye.